Let us start with a new topic, with a new chapter, and with a new beginning. That is the intellectual property rights. It's chapter 15 of the EBCL, of the ABCL paper. Now, in the chapter 15, what are the key concepts? These are industrial property, patents, trademarks, copyright, geographical indication, industrial designs. Now, we will directly go into the chapter. Now, first of all, we will look into the introduction. Introduction of the intellectual property rights. So, as the term intellectual property relates to the creations of human mind and human intellect, this property is called intellectual property. मतलब intellectual property क्या होती है? Because it is related to the creations of human mind and it is created due to the human intellect. It is known as the intellectual property. Intellect एक human के intellect से जो properties create होती है, it is known as the intellectual property. Creators can be given the right to prevent others from using their inventions, designs, or other creations, and to use that right to negotiate payment and return for others using them. मतलब ये क्या कहता है कि अगर कोई क्रिएटर कुछ चीज क्रिएट करता है तो वो किसी और को उसको यूज करने से रिस्ट्रेन कर सकता है, वो उसको मना कर सकता है कि तू इस चीज को यूज नहीं कर सकता. इस चीज पे उसका राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशंस, राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशंस, डिजाइन्स और अदर क्रिएशंस. मतलब अगर किसी ने एक डिजाइन क्रिएट की है, कुछ एकदम इनोवेटिव डिजाइन है, कुछ एकदम नई डिजाइन है, सो इट रिस्ट्रेन्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग दैट डिजाइन. So that gives the creator an intellectual right over his design or over his creations or over his inventions. Then the creation of intellectual property rights is increasingly being recognized in today's global economy and society. मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे नए नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों को, तो intellectual property rights is becoming an important forefront. Then intellectual property rights are considered to be the backbone of any economy, and the creation and protection is essential for sustained growth of nation. अब ये क्यों है? Why the protection of intellectual property right is an essential for an economy? Because अगर इकोनॉमी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर प्रिजर्व नहीं किया गया तो कोई भी किसी भी पेटेंट को यूज करके कुछ भी बनाना शुरू कर देगा. The owner would not have any intellectual right. The owner would not have the sole right over those properties. और कोई भी आके उस इनोवेशन, उस इन्वेंशन, उस क्रिएटिविटी को यूज करके अपना धंधा शुरू कर देगा. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो और उसके माध्यम से हम एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर सके जिसमें जो क्रिएट कर रहा है उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिले, उसको प्रॉपर अपनी फीस मिले, अपनी रॉयल्टीज मिले. सो देयरफॉर the law regarding the intellectual property rights is becoming increasingly for a nation's growth. The intellectual property rights are now not only being used as a tool to protect the creativity and generate revenue, but also to build the strategic alliances for the socio-economic and the technological growth. मतलब अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अपने भारत में कवच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है फॉर रेलवे टू यू नो so that trains do not collide. So India can use this intellectual property, use this invention in the global summits, in the global relations. So now the intellectual property rights are not just for creativity and generating revenues, but it helps in developing the nationwide and geopolitical relations between the two nations. Intellectual property is a property which has been created by exercise of intellectual faculty. It is the result of person's intellectual activities. Thus, intellectual property refers to the creation of mind, such as inventions, designs of industrial articles, literacy, artistic work, symbols, which are ultimately used in commerce. मतलब जो भी धंधा करने के, जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी चीज काम आती है, इन्वेंशन है, डिजाइन है, इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स है, कोई भी लिटरेरी वर्क है, कोई बुक लिखी है, कोई ऑथर ने किसी टॉपिक पे कुछ लिखा है, सिम्बॉल्स है या फिर आर्टिस्टिक वर्क है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कॉमर्स. नाउ the areas of intellectual property that it covers are copyright and related rights, that is the rights of performers, producers of sound recordings and broadcasting organizations, trademarks including service marks, geographical indications including appellations of origin, industrial designs, patents including the protection of new varieties of plants, layout designs of integrated circuits, and undisclosed information including trade secrets and test data. ये सब चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाती है. तो क्या क्या चीजें है? फर्स्ट, कॉपीराइट एंड द रिलेटेड राइट्स. जो भी कॉपीराइट है, कोई भी बुक लिखी है उस पर कॉपीराइट है, कोई भी म्यूजिक बनाया है उस पर कॉपीराइट है. दैट इज राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग इन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स. ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? किसी भी धंधे का जो लोगो है, किसी भी बिजनेस का जो
लोगो है, उसकी जो स्लोगन है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस इंक्लूडिंग अपीलेशंस ऑफ ओरिजिन, जो उस पर लिखा है फ्रॉम सूरत, फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम बीकानेर, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइंस, पेटेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, लेआउट डिजाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब इन मशीन्स देयर आर सर्किट्स, तो उसका भी अलग अलग टाइप से डिजाइन बनाई बनाई जाती है, तो उसका भी जो पेटेंट है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कवर हो जाता है। एंड द अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द ट्रेड सीक्रेट्स एंड द टेस्ट डेटा, मतलब ट्रेड सीक्रेट्स में क्या आता है? ट्रेड सीक्रेट्स अगर आपने सुना हो तो कोक इज अ कंपनी इन विच इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द chemical formula which it uses is very core. So it is the core of the business. So it is a most important asset for Coke. So these are the trade secrets and the test data, जो भी वो नए नए डायट कोक लाए तो डायट कोक में क्या यूज किया, सो वो जो टेस्टिंग की है तो वो भी एक अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन लोगों की बन जाती है। So intellectual property is a vital component of economic growth and a tool for corporate competitiveness in today's highly competitive global market. तो जैसे मैंने बोला कि कोक और पेप्सी दोनों का केमिकल फॉर्मुलेशन पे ही दोनों की कंपटीशन चलती है। सो द ट्रेडमार्क, सो द पेटेंट ओवर दोस फॉर्मूलाज is the main basis of the competition, is the main basis for, is the tool for the competitiveness, is a tool for corporate competitiveness। मतलब कोक और पेप्सी, कोक वर्सेस पेप्सी अगर हो ना, तो मेन लड़ाई उनकी किस पे है कि किसका केमिकल फॉर्मुलेशन, किसका फ्लेवर कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है, इसका केमिकल फॉर्मुलेशन कैसा है, तो उस पे ही लड़ाई होगी। तो इस पे राइट जमाने के लिए क्या होता है, तो द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स अ सोल राइट ऑफ दिस ब्रांड्स इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। So intellectual properties are the tool for the corporate competitiveness in today's highly competitive global market. Intellectual property rights serve as a catalyst for the development of innovations and inventions. मतलब अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होती ना, तो कोई इन्वेंशन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, क्योंकि अगर उसने किया तो कोई और उसको यूज कर देगा। सो टू क्रिएट अ एक्सक्लूसिव राइट ओवर दैट एसेट, इट इज necessary to have the intellectual property rights, and it serves as a catalyst, catalyst for the development of innovations and the inventions, ideas, innovations and creative expressions on the basis of which there is a public desire to grant the status of property are referred to as the intellectual property rights, in order for the inventors or developers of the property to profit commercially from the creative efforts or reputation. IPR grant them specific exclusive rights। जो मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव राइट क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्ट करे। There are various forms of intellectual property protection, including trademark, property, and patent. We saw earlier. Then, the technological management is to promote the effective and efficient use of created technology. Intellectual property are ideas, innovations, and creative expressions on which the public is ready to bestow the status of property. It is increasingly important to manage the technology, including efficient commercialization plans that make use of IPR benefits in a dynamic global context with shifting industry and competitive landscapes। तो मैंने बात की वही बात फिर से रिपीट की है यहाँ पे। Then, any original work of the human intellect, including works of art, literature, technology, and science, is considered as to be a work of intellectual property. The legal privileges granted to the investor or a creator to safeguard his invention or creativity for a predetermined amount of time are known as the intellectual property rights. So, the legal privileges granted to the inventor or creator to safeguard his invention or creativity for a predetermined amount of a time are known as intellectual property। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? the legal privileges that are given to the inventor or the creator to safeguard his invention, to safeguard invention for a predetermined amount and for a predetermined time is known as इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? इट इज अ लीगल प्रिविलेजेस, इट इज अ लीगल प्रिविलेज
that it is granted to the investor or the creator to safeguard his invention for a predetermined amount. एक amount pay करना पड़ेगा उसको 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 right दिलाने के लिए, and for a predetermined time is known as intellectual property right. So the legal privilege is given to the inventor or the creator to safeguard the invention for a predetermined amount and for a predetermined time is known as intellectual property right. Last time, the legal privileges granted to the investors or the creators to safeguard the invention for a predetermined amount and for a predetermined time is known as the intellectual property rights. Now, for a specific amount of time, these rights grant the this legal rights grant the investor or creators assignee the sole right to fully exploit their idea or production. The importance of intellectual property in the contemporary economy has long been established. Furthermore, it has been unequivocally proven that the intellectual work involved in the innovation must be given the attention it deserves if the innovation is to serve the greater good. मतलब अगर innovation को और specific बनाना और fast बनाना है तो ये rights देनी पड़ेगी inventors को, वरना उन लोगों को motivation नहीं आएगा कि मैं ये चीज क्यों बनाऊं। अगर मुझे उस चीज पे sole right मिल ही नहीं रहा, उससे मुझे revenue फ्यूचर में मिल ही नहीं सकते, तो मैं इसको क्यों बनाऊं। So for a greater good, it is beneficial to give these rights to the inventors and for the creators. Since it gives the inventor or creator of an IP an exclusive right to exploit his invention or product for a specific length of time, IPR is a powerful weapon for protecting investments in time, money, and effort. By enabling healthy competition, industrial progress, and economic expansion, IPR thereby contributes to the economic development of a nation. मतलब एक powerful weapon है. IPR is a powerful weapon for protecting the investments in time, money, and effort. मतलब उसका टाइम भी बचेगा, मनी मतलब फ्यूचर में इस चीज पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और इस चीज पे दूसरी कंपनीज को भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम दे आर गिवन देयर होल राइट, बट आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम द एफर्ट्स फॉर अ सोसाइटी एज अ होल वुड बी लेस. So by enabling healthy competition, industrial progress, and economic expansion, IPR thereby contributes to the economic development of a nation. Next, any society's progress is directly influenced by the IPR and the framework of its policy. Lack of understanding of IPR led to the demise of innovations, a high danger of infringement, financial loss, and the end of a nation's intellectual era. Therefore, there is a critical necessity for the transmission of IPR knowledge in order to support homegrown discoveries and technological advancements. Only by teaching the many stakeholders, including policymakers, farmers, academias, industry, researchers, and consumers about the significance of IPR and technology management can the process of IP awareness be accelerated in an agrarian nation like India. मतलब अगर सबको हम इन्वॉल्व करेंगे ना, तभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो मायना है, जो पावर है, वो ले जाएगा इंडिया को ग्रोथ की तरफ. So this was the basic understanding why intellectual properties are required in a nation. Now we'll go forward and read about more about the intellectual property. Then there is a regulatory framework. Regulatory framework में क्या क्या आता है? Patents Act 1970, Trademarks Act 1999, Copyrights Act 1957, Designs Act 2000, Geographical Indications Registration and Protection Act 1999. तो ये 4-5 लॉ आते हैं in the regulatory framework of intellectual property laws. Now, nature of intellectual property laws. इसका nature क्या है? What are the nature of intellectual properties? So first, intangible rights over the tangible property. IP's intangibility is the primary characteristic that sets it apart from other types of property. Although there are many significant differences between the various types of IP, one characteristic they all share is the establishment of property protection over the intangible objects like ideas, inventions, science, and information, as opposed to close relationships and other intangible assets which are tangible objects. When works are exploited for commercial purposes, it enables the creators or owners to profit from their creations. Intangible rights over the tangible property. मतलब जो इनोवेशन है, जो इन्वेंशन उन लोगों ने की है, जो डिजाइन उन लोगों ने बनाया है, तो इट गिव्स द राइट टू द क्रिएटर to fetch money for their inventions or the designs or the creativity that they have invented. So it gives a intangible right over the tangible properties that they have created. मतलब वो tangible नहीं है, but in a form it is a tangible. So it gives the property owner a right to get the money out of to get the profits for the commercial purposes. It enables the creators or owners to profit from their creations. Then second is right to sue. मतलब उसको एक लीगल राइट हो गया, तो उस पे
अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ, कोई भी कॉपी कॉपी केस हुआ, तो फिर वो अदर पार्टी को कोर्ट में जाके सू कर सकती है. सो आईपी इज अ रिसोर्स दैट कैन बी ओन्ड एंड मैनेज टू यूज द लैंग्वेज ऑफ लॉ. वो खुद ओन भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है. द मेजोरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज चैलेंज थ्रू लीगल राइट्स ऑफ एक्शन दैट कैन ओनली बी कैरिड आउट बाय पीपल हु हैज लीगल स्टैंडिंग. Since the IP is a property right, it can be inherited, purchased, gifted, sold, licensed, entrusted और pledged. मतलब right to sue मतलब इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनहेरिट भी हो सकती है, परचेज भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकते हैं, सोल सेल भी कर सकते हैं, लाइसेंस उसका लाइसेंसिंग भी मिल सकता है और प्लेज भी कर सकते हैं. सो subject to certain restrictions, the owner of an IPR owns a sort of the property that can be used however they like. मतलब ये जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी उनके पास है, वो जैसे चाहे वो यूज कर सकते हैं. उनके पास एक अपनी होल्डिंग आ गई है, वो अपने ओनर बन चुके हैं उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के. दे ऑल्सो हैव द लीगल राइट टू सू एनीवन हु यूजेस देयर इनोवेशन विदाउट देयर परमिशन एंड टू बी कंपेंसेटेड विद द एक्चुअल प्रॉपर्टी. मतलब अगर किसी और ने वो प्रॉपर्टी यूज की, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज की उसके बिना परमिशन के, उसके बिना मंजूरी के, तो he can ask and go to the court and ask for the compensation or for the damages or for the restriction to not use to not use such rights. Then rights and duties. Intellectual property results in both obligations and the property rights. The owner of the intellectual property is entitled to carry out specific tasks in connection with his creations. He has the sole authority to create, copy, sell, and otherwise exploit the work. Additionally, there is a negative right that bars others from using their statutory rights. मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, राइट में क्या होती है कि उसको वो सेल भी कर सकता है, सोल्ड भी कर सकता है, या फिर उसको क्रिएट करके कॉपी, ये सोल ऑथोरिटी टू क्रिएट, कॉपी, सेल एंड अदरवाइज एक्सप्लोर द वर्क. वो कुछ भी कर सकते हैं अपने वर्क के साथ, बट दूसरों पे एक बार लगा देता है कि भाई तू यूज नहीं कर सकता, दूसरा अपने यूज नहीं कर सकता. मैं चाहे जैसे भी यूज करूं, मैं कर सकता हूँ, बट दूसरा नहीं कर सकता. देन coexistence of different types of rights. In relation to a specific function, various IPR kinds may exist. For instance, an image of an innovation might be copyrighted and the invention itself might be patented. A design may be included in a trademark and may also be protected under the Designs Act. The numerous rights that can coexist in IP share many similarities and distinctions. मतलब ये क्या बोलता है, coexistence of different rights. मतलब एक आईपीआर, एक प्रॉपर्टी किसी ने बनाई तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्स में जाके भी उसका पेटेंट फाइल कर सकता है, उसको रजिस्टर करवा सकता है. सो फॉर एन इंस्टेंस एन इमेज ऑफ इनोवेशन माइट बी कॉपीराइटेड, उस पर कॉपीराइट का भी तुम लगा सकते हो, एंड द इन्वेंशन इटसेल्फ माइट बी पेटेंटेड. मतलब उसको जो जो इन्वेंट किया, जो इमेज इन्वेंट किया, उसको पेटेंट भी करवा सकते हो. अ डिजाइन मे बी इंक्लूडेड इन अ ट्रेडमार्क एंड मे आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइन एक्ट. मतलब अगर किसी ने एक डिजाइन बनाई है तो वो दो एक्ट में उसको रजिस्टर करवा सकता है. सो कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट, कोई डिजाइन एक्ट में भी जाके वो उसको रजिस्टर करवा देगा और ट्रेडमार्क उसका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा देगा. तो there are different types of rights, so there are coexistence of different type of rights. But in case of tangible assets, there is only one type of right, उसको एक ही टाइप का राइट मिलेगा. But in case of intangible rights, intellectual property rights, there can be a different type of rights that may be existing. So for instance, there are similarities between a patent and an industrial design, a trademark and a geographical indicator, and so forth. Some of the rights related to the intellectual properties are positive rights, while the others are the negative rights. Okay. Third point is the exhaustion of the rights. The doctrine of exhaustion generally applies to the intellectual property rights. Exhaustion fundamentally means that after the first sale made by the right holder or by the authority designated for its exhaustion, that person's right expires and is no longer permitted to halt the movement of the goods moving forward. मतलब अगर ए ने बी को बेचा, अब ए ऐसा नहीं बोल सकता कि बी तू अब आगे किसी स्पेसिफिक जन को ही बेचना. ही हैज exhausted his right. मतलब वो अपनी राइट एक ही बार के लिए यूज कर सकता है. सो एज अ रिजल्ट, once an IP rights holder has sold a physical good that bears IPS, it cannot stop subsequent sales of the goods. The first consent marks the end of the right. मतलब अगर इसने बेच दिया तो वो एग्जॉस्ट हो गई, वो राइट एग्जॉस्ट हो गई, वो इस पर रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकता कि भाई तू आगे नहीं बेच सकता. अगर ए ने कोई प्रोडक्ट बना दिया अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करके, और अगर वो बी को दे रहा है, that right gets exhausted. अब बी उस प्रोडक्ट को कैसे भी चाहे वो यूज कर सकता है. It doesn't prohibit B from selling the goods further. So it is the first concern. This theory is founded on the idea of
free movement of goods which is legitimate by the owner's permission or right. मतलब ओनर ने ही बोला ना कि भाई तू ये प्रोडक्ट बना और इसको आगे बेच, तो अब वो रिस्ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक बार कंसर्न दे दिया कि भाई तू बेच सकता है तो बेच, अब उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. सो इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज द एक्सक्लूसिव सेलिंग प्रिविलेज इन कनेक्शन टू द सम आइटम्स टू द सेम आइटम्स प्राइस. मतलब अगर उसने अपने पेटेंट रजिस्टर किया है या फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है और आगे बेचने के कंसेंट दे दिए, तो भाई खत्म तेरी राइट. अब तू फिर से ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तू बंद कर, अब तू उस पर रेस्ट्रिक्शन उस पे ऐसा लगा नहीं सकता कि लिमिटेशन नहीं लगा सकता कि तू आगे नहीं बेच सकता. देन dynamism. IPR is undergoing the continuous improvement. The realm of IP is expanding as quickly as technology in all spheres of human activity. New things are being added to the IPR scope, and the scope of its production is being enlarged in accordance with the demands of scientific technological advancement. Biopatents, software copyrights, and plant diversity protection are just a few examples of terms that highlight recent advancements in the IPR area. The value of intellectual property and its portability has long been recognized, and it is represented in all the spheres of government, including legislative, administrative, and judicial levels. मतलब intellectual property right अब grow कर रही है, उसमें continual improvement आता जा रहा है. So it is required that the laws governing the intellectual properties are made dynamic and are changed continuously, because कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंशन होता ही रहता है. बायो पेटेंट्स में होता रहता है, नए नए कोड्स आते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, नए नए हाइब्रिड प्लांट्स, सीड्स. एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है कि हाइब्रिड सीड्स ला सकते हैं. न्यू इनोवेशंस लाइक ट्रैक्टर्स, देन ड्रोन से पानी स्प्रिंकलिंग करना. सो नए नए डायनामिज्म, नए नए इंप्रूवमेंट्स होते ही रहते हैं. सो इट इज वेरी नीडफुल that an overall background is created for the intellectual property rights and a strong laws are created for the intellectual properties. So what are the nature of intellectual property rights? Nature of intellectual property rights, पहला क्या है? Intangible right over tangible property. Second, right टू सू. उसके बाद एक लीगल राइट आ जाती है कि वो कोर्ट में जाकर इस चीज के लिए केस फाइल कर सकता है. देन राइट्स एंड ड्यूटीज. उसके पास राइट है कि वो चाहे जैसे भी कर सकता है, वो चाहे जैसे भी यूज कर सकता है वो कर सकता है, बट किसी और पे रेस्ट्रिक्शन है कि वो उस पर थर्ड पार्टी पे रेस्ट्रिक्शन है कि तू नहीं कर सकता. द सेकेंड पार्टी हैज अ रेस्ट्रिक्शन टू नॉट यूज द प्रॉपर्टी. फोर्थ, कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स. मतलब मल्टीपल राइट्स एग्जिस्ट कर रही है. इन केस ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टीज एक ही टाइप का राइट आता है कि भाई तू ओनर है, तू बेच सकता है, बट इन दिस द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्ट में तुम जाके अपनी राइट्स क्लेम कर सकते हो. एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ. फिफ्थ क्या है? एग्जॉशन ऑफ द राइट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जॉशन ऑफ राइट्स इज एन इंपॉर्टेंट, मतलब एक बार अगर तुमने किसी और को दे दिया कि तुम यूज करो, बाद में तुम उस पर रेस्ट्रिक्शन, उस पर लिमिटेशन नहीं लगा सकते कि तुम मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले गुड्स को मत बेचो. सो वंस एक बार हो गया फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रिंसिपल. एंड द लास्ट इज द डायनामिज्म. एनवायरमेंट इज वेरी रैपिडली चेंजिंग, देयरफॉर इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि जो भी लॉस बना रहे हैं वो एकदम डायनामिक हो और विद चेंजिंग टाइम्स वो चेंज होते रहे. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ आईपीआर? एकदम फास्टली एकदम मस्त रीते रिवाइज कर देते हैं. नेचर ऑफ आईपीआर क्या क्या है? सो फर्स्ट, इट इज इंटेंजिबल राइट ओवर द टेंजिबल प्रॉपर्टी. राइट टू सू कोर्ट में ले जा सकता है. राइट्स एंड ड्यूटीज, कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स, काफी सारे एक्ट्स में उसका मतलब क्या तालमेल है. देन फिफ्थ, एग्जॉशन ऑफ द राइट्स. एंड सिक्स इज द डायनामिज्म. नेचर ऑफ आईपीआर क्या है? 6 पॉइंट. इंटेंजिबल राइट ओवर द टेंजिबल प्रॉपर्टी. सेकंड, राइट टू सू. थर्ड, राइट्स एंड ड्यूटीज. फोर्थ, coexistence of different rights. Fifth, exhaustion of rights. Sixth, dynamism. Now, need of intellectual property, we have discussed so much.
But if once want to go, we will go through. Every invention involves labor, time, and resources. The length of each project varies substantially. It could be anything from a few seconds to a few years. A certain amount of actual money is also necessary for any creative endeavor, along with education or knowledge, of course. Any creative professional making all of these investments is making a significant one. Therefore, it is important to acknowledge and honor a creator's intellectual work. मतलब जो भी वो वर्क कर रहा है उसमें पैसा लगा था, उसका उसका टाइम लगा था, उसका रिसोर्सेज लगा था, तो उसको एक ऑनरेरियम, उसको एक तालीम देने के लिए वी नीड टू ऑनर द हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉट बिकम कॉमन यूसेज अंटिल द 19th सेंचुरी. मतलब 19th सेंचुरी पहले उसका कुछ यूज नहीं था. Despite the fact that many of the legal rules governing the intellectual property rights have developed over the centuries. मतलब centuries जैसे पास ऑन हुए उसके थ्रू ये डेवलप होना शुरू हुआ था. It wasn't until the later half of the 20th century that it spread throughout much of the world. In 1967, the World Intellectual Property Organization was founded as a UN body. Since then, the phrase has gained significant traction in the US. A comprehensive international system for defining, safeguarding, and upholding intellectual property rights exists. It consists of multilateral treaty systems as well as international organizations like the European Union, World Trade Organizations, World Intellectual Property Organization, and World Customs Organization and United Nations Commission on International Trade Law. तो ये सब institutions बनी क्यों? क्योंकि as the century was progressing, there was a need for developing the rights over the intellectual, for developing the laws regarding the intellectual properties. Now, scope of intellectual property. Any range of IP rights is wide and there are two methods for classifying IP. मतलब दो टाइप की methods है. पहले two methods क्या क्या है? Two methods, दो टाइप की methods है. First and the second. First is copyright and second is the industrial property. Is the industrial property. Now, patents or inventories, trademarks, trade names, biodiversity, plant breeding rights, and other commercial interests are all examples of the industrial properties. मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो भी चीजें इंडस्ट्री में यूज होने वाली है, क्या क्या है? इन्वेंशंस, जो भी नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं. देन जो भी ट्रेडमार्क्स है, किसी भी चीज के लिए ट्रेडमार्क है. फिर ट्रेड नेम्स, जो नेम्स यूज हो रहा है. बायोडाइवर्सिटी में जो इन्वेंशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी इन्वेंशंस. देन उसके बाद क्या है? प्लांट ब्रीडिंग राइट्स. मैंने जैसे बोला कि एग्रीकल्चर इज द फील्ड वेयर देयर इज द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर कमर्शियल इंटरेस्ट. जो भी कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए जो भी होता है, दैट इज कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. And now comes the second part, that is the copyright. What is a copyright? So a novel creation, procedure, tool, or product is considered to be an invention. Copyright protects the expression or ideas that are distinct from patents but does not grant you the sole right to an idea. In addition, technological and scientific works, copyright applies to the arts and literatures. Copyright rules are a novel creation. A novel creation, procedure, tool, or product is considered to be an now, copyright rules applies to everything, including music and audiovisual works. 60 years after the creator's passing, copyright protection continues to be in effect. मतलब जिस दिन एक बंदा मर गया, उसके 60 साल तक वो कॉपीराइट चलता रहेगा. मतलब अगर ये जी रहा है, चलो 60 साल की उम्र में वो मर गया, उसके बाद के 60 years तक वो जो कॉपीराइट है वो चलता रहेगा. So in other words, a writer's book has a copyright protection both during his lifetime and for 60 years following his passing. In contrast to the patent laws, copyright laws do not mandate an administrative procedure. So this was the first lecture. This was the basic understanding of what is the need for intellectual property rights. In the next lecture, we will start with different organizations that are governing that give rise to the intellectual property rights in this world.